गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम लोग लास्ट क्लासेस में सीक्वेंस पढ़ रहे थे, तो उसी की अगली कड़ी में आज हम पढ़ रहे हैं कॉची सीक्वेंस। तो कॉची सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? इसकी ये पहली डेफिनेशन है, राइट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। A sequence an is said to be a Cauchy sequence if given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive integer m depending on epsilon such that mod of an minus am less than epsilon for all n greater than equal to m। तो स्टूडेंट यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं आप, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। आप एप्सिलॉन जितना छोटा लेंगे एम की वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी। एप्सिलॉन बड़ा लेंगे तो एम की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी, राइट। तो ये इसका ये मतलब है कि एम की वैल्यू डिपेंड करेगी एप्सिलॉन की वैल्यू पर, राइट। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है 1/n इज अ कॉची सीक्वेंस। ये कॉची सीक्वेंस है। कैसे कह सकता हूँ मैं कॉची सीक्वेंस है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे nth टर्म क्या है? दिस इज योर nth टर्म इक्वल टू 1/n और mth टर्म क्या होगी? 1/m। नाउ कॉची सीक्वेंस को चेक करने के लिए मैं निकालना क्या होता है? मैं निकालना होता है मॉड ऑफ an माइनस am। हमें ये प्रूव करना होता है इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी आएगी, किसी भी एप्सिलॉन से छोटी आएगी, चाहे जो मर्जी रखें। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या? 1/n माइनस 1/m। नाउ अगर मैं n की वैल्यू m से बड़ी ले रहा हूं तो what you get 1/n should be less than 1/m। दिस implies 1/n माइनस 1/m लेस देन 0। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो नंबर है ये क्या एक नेगेटिव नंबर है, राइट। तो अगर मैं इसका मॉड लेता हूं तो हमें पता है कि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया? इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो व्हाट यू गेट 1/m माइनस 1/n, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी हो, राइट। नाउ यू कैन चेक। आप देख सकते हैं कि 1/m माइनस 1/n इज लेस देन 1/m। Am I true or not? ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है नंबर, ये नंबर इस राइट हैंड साइड के नंबर से छोटा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? 1/n ऐड होके ये नंबर बनाया 1/m, राइट। अगर मैं इस नंबर में कुछ ऐड करता हूँ तो वो नंबर इससे बड़ा ही आएगा ना। तो मैंने क्योंकि इसमें 1/n ऐड किया तो ये नंबर बन गया, राइट। 1/m बन गया ये, राइट। मैं चाहता हूं ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा हो, राइट। ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा तब होगा जब ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा, राइट। क्योंकि अगर ये 1/m एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा तो ये अपने आप ही एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो व्हाट आई वांट दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो दोस्तों ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा तभी होगा जब ये नंबर क्यों 1/m से छोटा होगा, जो कि होता है। और ये नंबर हमें क्या चाहिए? एप्सिलॉन से छोटा चाहिए, तभी ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा, राइट। तो दिस इंप्लाइज, और ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है whenever m is greater than 1/epsilon, right। whenever m is greater than 1/epsilon। ये बताओ कि दोस्तों ये क्या m बड़ा होता है 1/epsilon से? बिल्कुल होता है। by which property? It is the property of Archimedean। you can say Archimedean theorem, Archimedean property, Archimedean principle,
This is your Archimedean property. What is Archimedean property? What it says? It says for every positive real number, for every positive real number, यहाँ पे positive real number क्या है? 1 by epsilon है. There exists a positive integer m such that m is greater than 1 by epsilon. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ आ गई आप लोग? तो इसका मतलब ये हमेशा ही ट्रू होता है. दैट मीन्स m इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन. अगर m इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन है, इसका मतलब है 1 बाई m इज लेस देन एप्सिलॉन. अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है 1 बाई m माइनस 1 बाई n की वैल्यू हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगी. राइट? हम एप्सिलॉन कुछ भी लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो इस m की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी. ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है, ये मॉडुलस ऑफ 1 बाई n माइनस 1 बाई m लेस देन हो गया एप्सिलॉन से. राइट? ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज mod of 1 by n minus mod of 1 by n minus 1 by m always less than epsilon for all n greater than equal to m. m एक फिक्स वैल्यू है, n एक आर्बिट्री नंबर है. इस n की वैल्यू सिर्फ m से बड़ी होनी चाहिए. तो ये सभी n के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है. तो दिस implies this is true, right? This is true. This implies sequence 1 by n is a Cauchy sequence. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. अगला एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स. अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2. इसको हम E2 कह लेते हैं स्टूडेंट्स. एग्जांपल 2, 1 बाई n स्क्वायर इज अ Cauchy sequence. कैसे करते हैं इसको स्टूडेंट्स सॉल्यूशन? तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे लेट अस टेक लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन. आपको एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन कोई भी चूज कर लो आप, एंड लेट n इज ग्रेटर देन m. हमने n की वैल्यू m से बड़ी चूज कर ली है. राइट? नाउ लेट अस चेक. नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ an माइनस am. हमें चेक करना है इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी आती है कि नहीं आती है. दिस वैल्यू शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन यू कैन चूज. ठीक है स्टूडेंट्स? तो करते हैं स्टूडेंट्स. तो an का मतलब क्या है यहाँ पे? an का मतलब यहाँ पे है 1 बाई n स्क्वायर, और am का मतलब क्या है? 1 बाई m स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स? तो नाउ बिकॉज we have taken n greater than m, this implies
1 by n less than 1 by m. This implies 1 by n square less than 1 by m square. This implies 1 by n square minus 1 by m square is a negative number, right? This implies mod of 1 by n square minus 1 by m square should be equal to minus ब्रैकेट 1 by n square minus 1 by m square, क्योंकि हमें मॉडुलस निकालते वक्त हमेशा आंसर पॉजिटिव में चाहिए होता है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. व्हाट यू गेट 1 by m square minus 1 by n square. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट आई वांट दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, ये एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए. तो चेक करते हैं ये किस तरह से, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस रिजल्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर है. नाउ 1 by m square minus 1 by n square is less than 1 by m square. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है ये वैल्यू हमें लेस देन एप्सिलॉन करनी है, और ये वैल्यू एप्सिलॉन से लेस हमेशा होगी अगर ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है, राइट? अगर इफ दिस नंबर बिकम्स लेस, because this number is less than 1 by m square, so this number is always be less than epsilon if 1 by m square is less than epsilon, right? ठीक है स्टूडेंट्स, so this implies what? This implies 1 by n square minus 1 by m square less than epsilon if 1 by m square is less than epsilon. That is if m square is greater than 1 by epsilon. That is if m is greater than 1 by root epsilon, right स्टूडेंट्स? तो इस तरह से अब क्या करना है स्टूडेंट्स आगे, तो अगर ये m 1 by root epsilon से बड़ा होगा then only this is possible. Mod of 1 by n square minus 1 by m square is less than epsilon. तो क्या ये नंबर 1 by root epsilon से बड़ा होता है? Yes, it is. Why? How you can say that? Because of Archimedean property. Archimedean property. Right. What it says? It says for every positive real number, यहाँ पे here the positive real number is 1 by root epsilon, right? For every positive real number there exists a positive integer m such that m is greater than 1 by root epsilon. ठीक है स्टूडेंट्स, तो that is why m is greater than 1 by root epsilon is always true, is always true.
ये हमेशा ही आपके पास एक इंटीजर जरूर होगा जो 1/√एप्सिलॉन से बड़ा होगा। आपकी मर्जी है कि इस एप्सिलॉन को आप कितना छोटा या कितना बड़ा चूज करें। राइट स्टूडेंट्स? तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज mod of 1/n² minus 1/m² less than epsilon is also true. Is also true, right? This implies sequence 1/n² is a Cauchy's sequence. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके दो एग्जांपल्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल 3। ठीक है स्टूडेंट्स, n/n+1 is a Cauchy sequence. Is a Cauchy's sequence. Why it is so? देखिए, here let epsilon is greater than 0 be given, and let us take n greater than m, right? Then an equal to n/n+1, am equal to m/n+1. Now mod of an minus am is equal to mod of n/n+1 minus m/n+1, right? Now simplify it. मैंने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया और माइनस कर दिया और नीचे लिख दिया n+1। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। It does not affect the result, right? This implies an minus am is equal to 1 minus 1/n+1, right? तो और ये आ गया स्टूडेंट्स -1 + 1/n+1 and get 1/m+1 minus 1/n+1। ठीक है। Now because we have taken because n is greater than m, this implies n+1 greater than m+1, right? This implies 1/n+1 less than 1/m+1, right? This implies
This implies 1 by m plus 1 minus 1 by n plus 1 is a positive number. This implies mod of 1 by m plus 1 minus 1 by n plus 1, क्योंकि mod of positive number क्या तो पॉजिटिव नंबर ही होता है, राइट? सो दैट इज वाई इट इज इक्वल टू 1 by 1 plus 1 minus 1 by n plus 1, राइट? अब स्टूडेंट्स हमें इसे क्या प्रूव करना है? इसे एप्सिलॉन से लेस प्रूव करना है। तो इसको एप्सिलॉन से लेस प्रूव करने का मतलब है इसको एप्सिलॉन से लेस प्रूव करना है, राइट? और ये एप्सिलॉन से लेस होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा। लेट अस सी, क्या ये एप्सिलॉन से छोटा है, राइट? नाउ कंसिडर कंसिडर 1 by m plus 1 minus 1 by m plus 1. This is always less than 1 by m plus 1, right? ठीक है, and this is always less than 1 by m, right? तो ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा तब होगा अगर मैं इसको एप्सिलॉन से छोटा कर दूं, ठीक है? इसका मतलब ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा तभी हो पाएगा अगर हमें ये पता हो कि ये एप्सिलॉन से छोटा है या नहीं है। अगर ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा हो जाए तो ये नंबर अपने आप ही एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, राइट? तो ये एप्सिलॉन से छोटा होगा तभी होगा जब ये एप्सिलॉन से छोटा होगा, राइट? तो लेट अस चेक, क्या ये एप्सिलॉन से छोटा है? लेट अस चेक। सो it means what? It means mod of 1 by m plus 1 minus 1 by n plus 1 less than epsilon if 1 by m is less than epsilon, if m is greater than 1 by epsilon। क्या ये एप्सिलॉन से तभी छोटा हो पाएगा अगर m 1 by epsilon से छोटा हो, which is always true, which is always true। क्यों ट्रू है स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट्स ये इसलिए ट्रू है क्योंकि because of Archimedean property। Archimedean property, and what Archimedean property say? Archimedean property क्या कहती है? Archimedean property कहती है for every real number, यहां पे वन रियल नंबर क्या है? 1 by epsilon। There exists a positive integer m, such that m is greater than 1 by epsilon। ये बात ट्रू है किस प्रॉपर्टी से? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, ठीक है? तो क्योंकि ये बात हमेशा ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, और यही एक कंडीशन है जिसकी वजह से m is greater than 1 by epsilon is the only condition that guarantees that this becomes less than epsilon। ठीक है स्टूडेंट्स? m की वैल्यू अगर 1 by epsilon से बड़ी होती है तो वो इस बात की गारंटी होती है
कि 1/m+1 माइनस 1/n+1 एप्सिलॉन से छोटा होगा, चाहे आप एप्सिलॉन कुछ भी रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ये मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज 1 an minus am mod is less than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू m से कभी बड़ी ले लें या बराबर ले लें तो an माइनस am की वैल्यू में से लेस देन एप्सिलॉन आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, where n is the natural number, where n is a natural number, right? This implies the sequence n by n plus 1 is a Cauchy sequence। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल 3 था, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, तो एग्जाम्पल 4 में क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा एग्जाम्पल 4 -1 raised to power n divided by n is a Cauchy sequence। Is a Cauchy sequence, right? Solution let epsilon greater than 0 be given, and let us take n greater than m, right? Now let us calculate the value of mod an minus am, and that comes out to be -1 raised to power n divided by n minus -1 raised to power m divided by n, right? Right students, now this is always less than and equal to mod of -1 raised to power n divided by m plus mod -1 raised to power m divided by, this is n,
divided by m, right? So this implies mod of an minus am becomes less than equal to 1 by n plus 1 by m, right? What I want this should be less than epsilon. ये छोटा एप्सिलॉन से ये नंबर हमें लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म्स है इसे हमें एप्सिलॉन से छोटा प्रूव करना है। ये एप्सिलॉन से छोटा हमेशा होगा अगर ये राइट हैंड साइड की टर्म 1 बाय एन प्लस 1 बाय एम एप्सिलॉन से छोटा होगा, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने माना है वी हैव कंसिडर अर्लियर दैट n is greater than m, this implies 1 by n less than 1 by m. Any problem here? So we can write here in this case this is always less than 1 by m plus 1 by m, right? ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहां समझने में इसको? ठीक है, तो an माइनस एम हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा अगर ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, और ये हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा अगर ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू 2 बाई m. That means what I want this should be less than epsilon, and this is possible if m is greater than 2 by epsilon, right? तो इसका ये मतलब है कि अगर मुझे ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा चाहिए, इफ आई वांट दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ m is greater than 2 by epsilon. In other words, I can say m की वैल्यू अगर 2 by epsilon से बड़ी होगी, if the value of m is greater than 2 by epsilon, then it is always guaranteed that mod of an minus am less than epsilon. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये है कि ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा तब होगा जब ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा तब होना है जब m is greater than 2 by epsilon, right? And which is always true, which is always true, this one, right? Why it is so? Because of Archimedean property, right? And what is that Archimedean property, students? What is that Archimedean property? Do you know that? ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हम कई बार पढ़ चुके हैं, अब तक याद हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है? इसका प्रूफ भी हमने किया था, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, ठीक है? और ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी उसी तरह है जिस तरह हम पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में जरूर यूज होती है। इसी तरह है जब भी हम रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस करेंगे तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती रहती है, राइट? तो इस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे ढंग से में आनी चाहिए, इसका प्रूफ आना चाहिए, इसका प्रूफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, राइट? तो देखिए, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है स्टूडेंट्स, फॉर every real number, for every positive
real number for every positive real number. यहाँ पे रियल नंबर क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है 2/epsilon, राइट. there exist a positive integer m, such that m is greater than 2/epsilon. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमेशा ही ट्रू होता है. सो दिस इज ऑलवेज ट्रू. दैट मीन्स बिकॉज m is greater than 2/epsilon is true, this implies mod of an minus am is less than epsilon is also true. Is also true because where am equal to minus 1 raised to power n divided by n, and am equal to minus 1 raised to power 1 minus 1 raised to power n divided by, so this is n divided by m, right. ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा लिख लेते हैं. क्या हो गया, तो क्या बोला, am is equal to minus 1 raised to power m divided by m. ठीक है स्टूडेंट्स, तो this implies the sequence minus 1 raised to power n divided by n is a Cauchy sequence. ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स. लास्ट एग्जांपल करते हैं आज के दिन का. ठीक है, बाकी एग्जांपल एज ए एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा. एग्जांपल नंबर 5. ठीक है, 1/2 raised to power n is a Cauchy sequence. ठीक है स्टूडेंट्स, ये Cauchy सीक्वेंस है. कैसे है देखिए, लेट सॉल्यूशन इसका. आपको जो भी मैंने आज करवाया आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं. ठीक है, तो ये लास्ट एग्जांपल लेके चलते हैं आज के दिन का. तो लेट epsilon greater than 0 is given. And also let n greater than m, right. अच्छा, इसमें यहाँ पे एक चीज़ और लिख देना आप लोग, इज ट्रू फॉर ऑल n greater than or equal to m. ठीक है,
ये आप जरूर लिख देना यहाँ पे साथ में, ठीक है। और हाँ, ये भी आप जरूर लिख देना यहाँ पे कि हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो नाउ let us check let us check the value of mod an minus am, right? तो यहाँ पे an कितना है? an is 1 by 2 raised to power n, and what is am? am is 1 by 2 raised to power m, right? ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ mod of an minus am is equal to 1 by 2 raised to power n minus 1 by 2 raised to power m, right? And that is equal to 1 by 2 raised to power m minus 1 by 2 raised to power m. ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे m आ गया, यहाँ n आ गया, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ है because it is we have taken n greater than m, right? This implies 2 raised to power n greater than 2 raised to power m. This implies 1 by 2 raised to power n less than 1 by 2 raised to power m, right? This implies 1 by 2m minus 1 by 2m is a negative number. Right? तो इसलिए 1 by 2n minus 1 by 2n ये क्या एक नेगेटिव नंबर है. दिस इज ए नेगेटिव नंबर. द नंबर इनसाइड दिस मॉड्यूलस इज नेगेटिव नंबर. तो इस नेगेटिव नंबर को जब मॉड्यूलस निकालेंगे हम लोग, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इस पूरे नंबर को अपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से ये आ गया 1 by 2m minus 1 by 2n, राइट? 1 by 2 raised to power m minus 1 by 2 raised to power n. Now students, what we want? We want 1 by n minus 1 by n. Sorry. My mistake. What I want this should be less than epsilon. मुझे ये epsilon से लेस चाहिए. इसका मतलब है मुझे ये 1 by 2 raised to power n minus 1 by 2 raised to power n भी लेस देन epsilon चाहिए. ठीक है? और ये नंबर किससे छोटा होता है? ये नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1 by 2 raised to power m, राइट? तो इसका मतलब है ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा तब होगा जब ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा. तो इसका मतलब ये अगर किसी तरह एप्सिलॉन से छोटा हो जाए तो दैट इज ऑलवेज गारंटेड दैट दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, राइट? सो this is less than epsilon only if 2 raised to power m is greater than 1 by epsilon, right? That is if log 2 raised to power m is greater than log 1 by epsilon. क्या किया हमने? we have taken log both sides.
that is if m log 2 is greater than log 1 by epsilon, right? That is if m is greater than log 1 by epsilon upon 1 upon log 2, right? Now this is a positive number. This is a positive number, right? So that means this always be true. Which is true? Which is always true? Which is always true. Why it is true? It is true because of Archimedean property, right? और Archimedean property क्या कहती है? What Archimedean property says? It says for every positive real number, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर क्या है? log 1 by epsilon divided by log 2. This is a positive real number here. For every positive real number, there exist a positive integer n such that m is greater than that real number, that positive real number. And what is that here? Here it is log 1 by epsilon divided by log 2, right? तो ये एक ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, so this implies mod of 1 by 2 raised to power n minus 1 by 2 raised to power n always less than epsilon for all n greater than equal to n, right? This implies the sequence The sequence 1 by 2 raised to power n is a Cauchy sequence. ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा. ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए राजेंद्र सिंह को दीजिए इजाज़त. धन्यवाद.